Hello bachcho, let us read the question. So the question says the correct statements pertaining to the adsorption of a gas on a solid surface is या फिर are. So first of all, the key concept here is knowing the working of adsorption, the process and the working of adsorption. So see, when a gas is adsorbed on a solid surface, the surface energy is decreased, which means a stable product is formed. So, this is why adsorption is always exothermic, right? It releases energy. So, we know the two types of adsorptions. One is the chemical adsorption or chemisorption, and the other is physisorption or the physical adsorption. This is physisorption. सो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि फिजिसॉर्प्शन वैन डर वाल्स फोर्सेस से वर्क करता है बट केमिसॉर्प्शन केमिकल बॉन्ड्स बनाता है एंड एज वी ऑल नो केमिकल बॉन्ड्स आर मच मोर स्ट्रॉन्गर दैन वैन डर वाल्स फोर्सेस. वैन डर वाल्स फोर्सेस आर वीकर इन कंपैरिजन, जिसका मतलब है फिजिसॉर्प्शन इज रिवर्सिबल एंड इसमें कोई एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है. No activation energy required. But chemisorption is irreversible and activation energy is required. So let us read these statements and see सही क्या है and गलत क्या है. So statement 1 says adsorption is always exothermic. This statement is correct. Statement 2 says physisorption may transform into chemisorption at high temperature. देखिए, chemisorption में एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. वैसे तो ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, जिसका मतलब है कि व्हेन टेम्परेचर इज हायर द रेट ऑफ द प्रोसेस विल डिक्रीज. दोनों प्रोसेसेस के साथ यही होगा. बट क्योंकि केमिसॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, सो इट डज नॉट वर्क ऑन वेरी लो टेम्परेचर्स. फिजिसॉर्प्शन वर्क्स ऑन वेरी लो temperatures, but chemissorption works on higher temperatures. So physisorption में अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा लें तो chemissorption में ट्रांसफॉर्म कर जाता है, which means this statement is also correct. Now let's see statement 3. Physisorption increases with increasing temperature. This is wrong. The rate of this process is inversely proportional to temperature. Physisorption will be inversely proportional to temperature. So this is incorrect. Chemisorption decreases with increasing temperature. ये वाला part सही है, but first part is wrong. Now let's go to statement D. Chemisorption is more exothermic than physisorption. However, it is very slow due to higher energy of activation. Chemisorption is more exothermic क्योंकि chemical bonds are stronger and more stable. ज़्यादा स्टेबिलिटी अटेन करने की वजह से ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है. सो केमिसॉर्प्शन ज़्यादा एक्सोथर्मिक है दैन फिजिसॉर्प्शन. बट
the activation energy required for chemisorption is also high, जिसकी वजह से ये process is काफी slow. So now we know that the correct statements are statement A, statement B and statement C. So हमारा आंसर होगा A, B and C. Hope you were able to understand. Best of luck.